of mercury ion. So our developed paper-based sensor can determine the toxic entity and the presence of mercury in the sample, and it can be an effective point of care diagnostic tool. It is a green top, it is cheap, robust and user-friendly. Anyone can use it. We don't need any well-stocked laboratory to use them. It is classified into simple lipids, compound lipids and derived lipids. And if we see the simple lipids which we use in daily life are the oils and the fats that are routinely used in our daily life. Next. Saturated fatty acids are without any double bond or triple bond. We can say that it is a straight chain carbon-hydrogen bond with a carboxylic group. And these are mostly obtained from the animal sources and the milk sources. And if we see that its structure is such fat that it is solid in nature, and that is why it gets deposited in the body and are responsible for the number of the diseases such as atherosclerosis, coronary heart disease and all these things. The saturated fatty acid is the main component which is responsible for causing all the diseases in the body. Next. Monounsaturated fatty acid includes folic acid. Now, if we come from saturated to monounsaturated and polyunsaturated, there are many advantages we can see in this. That is, first is it is not solid in nature. Why? Because you can see the structure here. It consists of the double bonds, and the double bonds actually creates the kings. एक बैंड फॉर्म करता है जिसके कारण वो सॉलिड पैक नहीं होता और इसीलिए ऑयल्स वो ऑयली इन नेचर होते हैं, लिक्विड इन नेचर होते हैं. So if we see the MUFA and PUFA, the short form of monounsaturated fatty acids, these have got many benefits in the oils which we use in daily life. So we welcome you. आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। Sage Anandam to all the dignitaries, experts, faculty members and delegates. I, Dr. Ekta Jain, greet you all in the collectively function of 4th International Conference on interdisciplinary approaches in science, engineering and technology. Before moving forward to the program, I would like to request all the dignitaries to enlighten the lamp before Goddess of Knowledge and Art, symbol of free flow of wisdom, Mother of Vedas, Ma Saraswati. In progress. चला Yeah.
We are blessed with the graceful presence of our constant source of motivation and support, Dr. Vikas S. Page, Director, SIRT Excellence. I would like to call upon Professor Nazia Shafi to welcome Dr. Vikas S. Page with a bouquet. Welcome, sir. Here we have the presence of Mr. Arpit Soni as a special guest, Director, Robonox India, Bhopal. I would like to invite Dr. Smita Rajan to welcome Mr. Arpit Soni with a pamphlet. Welcome, sir. We have successfully organized this conference with the objective to provide an opportunity to expand the knowledge that one has in all branches of science, engineering and technology. We have conducted 6 keynote sessions in hybrid mode with the learned invitees. Dr. Janaka Agasturiya from Sri Lanka, Dr. Ashita Mahabaghe from USA, Dr. Vipul Srivastava from LPU Punjab, Dr. Nitesh Panchal, Dr. Anju Mansari and Dr. Chandrakant Makode. Many learned experts were there as a session chair. Almost 150 researchers, academicians and faculty members have participated in this conference. Leadership is not about titles, positions or flow charts. It is about one life influencing another. With these words, I would like to request Dr. Vikas S. Page, Director, SIRT Excellence, for his welcome note. और सभी को सेज आनंदम। ये सब मैंने नया शुरू किया है। सेज आनंदम। अभी कल सुबह इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी और अभी गरीब प्लेस पे इसका हम समापन कर रहे हैं। 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस रही, लेकिन 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में टेक्निकली काफ़ी कुछ हो गया। उसमें कुछ तो होता है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं और जो भी गेस्ट आए हुए हैं उन्होंने भी कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। सो इस समापन समारोह में सबसे पहले तो मैं हमारे जो चीफ गेस्ट हैं जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आभार भी प्रकट करता हूँ कि अपने व्यस्त समय जैसे उन्होंने कुछ क्षण हमें भी प्रदान किए। इसी तरह से डॉक्टर भार्गव सर, आपका भी बहुत बहुत संस्थान में स्वागत है, बहुत धन्यवाद आप यहाँ पे बता रहे। और इसके अलावा जो कल भी और आज भी इंटरनेट पर्सनैलिटीज हमारे इंस्टीट्यूट में आए हैं, हमारे इंस्टीट्यूट का आपके आने से गौरव बढ़ा। बहुत बहुत आपका भी समापन समारोह में स्वागत है। जैसे कि एक बार मैंने बताया कि करीब 150 प्रेजेंटेशंस हुए एंड आई एम वेरी मच श्योर कि जिन लोगों ने भी ऑफलाइन तो कम रहे थे, ऑनलाइन काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े रहे। आजकल अस्पताल के चलते हुए या कुछ प्राइवेट कॉलेज के कंस्टेंट जो होते हैं 2 दिन की ऑफिशियल छुट्टी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए लोगों ने समय निकाल के ऑनलाइन जरूर इसका काफ़ी लाभ लिया। मैंने कहा था कितने लोग ज्वाइन करते हैं क्या, तो काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों ने ज्वाइन किया है। और पहले कॉन्फ्रेंसेज जो होती थी हम देखते थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई या सीएससी हो गई या सिविल ऑर्गेनाइज कर गई, उस साल से ट्रेंड चला है क्योंकि बहुत ज़रूरी था इंटरडिसिप्लिनरी वाला। क्योंकि हम जो है अपने अपने ब्रांचेस में एयरटाइट कंपार्टमेंट्स में बैठ के काम नहीं कर सकते।
अब जो इनोवेशन भी हो रहे हैं, जो रिसर्च हो रहे हैं, उसमें अगर आपको दूसरे फील्ड का नॉलेज नहीं है तो मामला वही अटक जाता है। तो फॉर दैट इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस होना और नॉलेज होना इज वेरी मच एसेंशियल। उसके लिए हमने भी अब ये लगातार 14 साल है जो हम ये कर रहे हैं और आगे इसको बहुत अच्छे लेवल पर करेंगे। कोरोना काल में तो पूरा ही ऑनलाइन मोड में हुआ था, इस बार हमने हाइब्रिड मोड में किया है। जैसे जो है हमारी कोशिश रहेगी कि पूरी तरह से इसको ऑफलाइन करें और जो इंटरनेशनल हमारे स्पीकर्स रहे हैं उनको भी हम वहाँ पे लेके आए। तो एक प्रयास है थोड़ा सा जिसके तहत सोच रहे हैं कुछ अगर अपनी तरफ से समाज के लिए कर सके। तो आज अगर हम कुछ भी लाइफ में कंफर्ट में है तो उसे इसलिए है कि हमसे पहले वाले लोगों ने उसमें जो है वो रिसर्च किया, अपने कुछ कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम किया। नेचुरली रिसर्च करना तो कुछ रूटीन एक्टिविटीज हट के करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपसे बैठे रिसर्च हो गया, आपको अपना समय बताना पड़ता है, अपनी फैमिली लाइफ उसमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, अपना खाना पीना आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आदमी को अगर जो ट्रू रिसर्च में डूबा रहता है उसको ये भी ध्यान रहता है कि ठंडी कपड़े धुले भी हुए कि नहाया धुला है कि नहीं, तो लगा रहता है। तो उन सब का अगर हम भूल रहे हैं तो थोड़ा सा हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ी का हम जीवन स्तर बहुत अच्छा करें थ्रू इनोवेशन बिजनेस। तो इसके लिए ये प्रयास है। मैं मुझे उम्मीद है कि काफ़ी कुछ हमारे पार्टिसिपेंट थे उन्होंने सीखा होगा और आगे सीख करेंगे। बहुत से यहाँ पे पेपर्स आए हमारे पास जो लोगों ने प्रेजेंट भी किए हैं या भेजे हैं। जो लोग यहाँ पे हैं अभी स्पेशली जो हमारे यंग लोग हैं, इसे मैं कहना चाहूँगा कि पेपर अगर आप देखना है तो इसके लिए ये कि हमारी संख्या बढ़े, उस काम को हम आगे बढ़ेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ फ्रूटफुल निकलना चाहिए। सिंपली राइट फॉर पेपर से नॉट बी टास्क। आप आराम से कर सकते हैं, नेट पे भी इतना अवेलेबल है बनी गई कि पेपर उसमें से बना के छापा जा सकता है, इवन अच्छी जगह में छापा जा सकता है। बट दैट शुड नॉट बी द एंड ऑफ इट। देखिए उसमें से क्या निकल जा सकता है और ऐसा क्या बना सकते हैं उसमें जो हमारी सोसाइटी के लिए जो है यूजफुल हो, हमारे लिए हो, हमारी सोसाइटी के लिए यूजफुल हो और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो। प्लस उसमें से कुछ और निकले। हर अगर आप जो है कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें एक अगर आपने चीज़ निकाली तो उसमें से 10 चीज़ जो है वो नहीं निकल सकती है, तो 10 में से 100 निकल सकती है। इस तरह से काम अगर हम बढ़ाएंगे तो आगे बहुत अच्छा रहेगा। और बस कुछ ऐसा ना बने कि हम में से ऐसा कोई नहीं करे, लेकिन फिर भी कभी देखिए कुछ ऐसा ना हो जिससे कंस्ट्रक्शन की वजह से डिस्ट्रक्शन हो। एटम बम बना दिया, क्या मतलब रहा उसका, है ना? तो इस तरह का जो है वो चीज़ ना निकले, कंस्ट्रक्टिव चीज़ रहे। आज मोबाइल का देखिए आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, हर एक जेब में मिलेगी और आज की तारीख में मोबाइल के बिना आप अपना जीवन मतलब सोच ही सकते हैं जिन्हें की कल्पना नहीं की जा सकती मोबाइल के बिना। और जब हम भी करके निकले थे उस समय इंटरनेट नाम की चीज़ भी नहीं इंडिया में बता दो। कैन इमेजिन आज तो सारी दुनिया जो है आपके हाथ में, आपके पॉकेट में सारी दुनिया है, उस समय इंटरनेट ही नहीं था दुनिया में, जो कितनी तेजी से दुनिया तरक्की की है। इसको आगे बढ़ाया लेकिन अच्छे कंस्ट्रक्टिव वे में। आज बेसिकली मैं चाहूँगा कि हमारे जो दोनों आदरणीय मेहमान आए हैं इनको हम सुन के कुछ और ज्ञान प्राप्त करें। तो इसके लिए मैं अपना उद्बोधन की समाप्त करूँगा। एक बार फिर से मैं आप दोनों महानुभावों का जो हमारे इवेंट पर्सनैलिटीज आए हैं उनका, जो पार्टिसिपेंट है उनका, एंड स्पेशली जो हमारी इंटरनल टीम रही अर्चना सक्सेना मैडम के अंडर में जितना भी लोगों ने काम किया है, नाजिया मैडम हो गई, स्मिता मैडम हो गई, एकता मैडम हो गई और चीज़ें जो लिखे मैं नाम ले रहा हूँ तो पूरा अंदर मैडम हो गई, सब अपना हमारा नाम नहीं लिया। तो द एंटायर डिपार्टमेंट नीरव मैडम ने दी नीरव मैडम हो गई, सबने जो है उसके अलावा दूसरा डिपार्टमेंट जो हमारे सीएस मैकेनिकल और सिविल है इनका भी भरपूर इसमें योगदान रहा। तो सभी को जो है मैं धन्यवाद भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ इसलिए सफलतापूर्वक समापन हुई। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Thank you so very much, sir, for your motivating words. We have the imminent presence of Dr. Ravi Shankar Bharadwaj as a guest of honor in this celebratory function. Before inviting him, I would love to highlight his brief introduction. He has a vast
of 35 years in research and scientific administration. He is in charge project director of many schemes, published more than 30 research papers in the Journal of Review, guided 36 PG students and 4 PhD students. He has conducted more than 30 seminars and participated in almost 150 seminars, webinars and workshops. He has represented the state in Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission, Department of Space, Government of India in 1999. He was involved in the preparation of Wetland Atlas of Madhya Pradesh, sponsored by Space Application Center, Department of Space, Government of India. Presently, he is working as a senior principal scientist and head, Research and Development, Madhya Pradesh Council of Science and Technology, Bhopal. Now, with honor and respect, I would like to invite Dr. R.S. Bharadwaj sir. Thank you, madam, for giving me an opportunity. Respected Director Aditi, our chief guest of today's program, Dr. J.P. Shudraji, Chief Scientist Secretary, Sazera madam, Gita Jana, and all the distinguished professors, teachers, students, and organizers. Indeed, it is a privilege for me to come to Sirt again and again and be to your various organizations. In fact, it's a big group. Of course, everyone knows what stage is, but for me, it is a, as Professor Pani said, even I point one small place. It is strategic and for generation of ideas. You make seed. Well, as this conferences, I was going through the papers and just interdisciplinary approaches in science, engineering, technology. I would like to say that earlier we were, in my college days, we were studying generalized subjects, like it was just civil, mechanical, electrical, or maybe later on it was electronics and other. So it was a bandwagon, as the director sir also said, that we must complement each other. In fact, nowadays what is happening is we are producing specialists. And as far as the MA Council of Science and Technology is concerned, we see to the development of science and technology in the state. We sponsor programs. We always look forward to the institutes like SAGE, Sagar Group, and other colleges all over Madhya Pradesh, wherein we provide a platform for them to organize. It is just not a process of 1 day or 2 days. It is a continuous process. And we learn every day. In fact, as you were reading my biodata, we also did a lot of research work because research is a passion. And most of the students of today, they just study at one subject or other. And earlier, as the saying goes, that master of all is jack of none. So, but it is not like that. You have to be master of some. Or rather, jack of all trades, master of none. So it is jack of all trades, master of some. And when you come about artificial intelligence or CS or other field, I would like to say that the basic scientific fields such as physics, electronics, telecommunication, chemistry, and other subjects, they are all interlinked. We study mathematics at our college level and school level. At that time, we never knew that what exactly mathematics will fetch, because normally you don't see any mathematics person by just having a degree in SC or a PhD and going to a big company like Intel or Oracle. But nowadays, you just see that they write algorithms, they write so many programs
that even they beat the students of CSE. So my humble request to all the students, all the faculty is just don't run behind any one single subject and one single research. You have to do interdisciplinary, they all complement each other. हम लोग जैसे देखते हैं कि कोई भी मिशन जब चलता है, चाहे वो वनलैंड का हो, चाहे वो एरोस्पेस हो, चाहे वो रॉकेट साइंस हो, सभी की जरूरत होती है। जैसे अगर कोई प्रोग्राम मिलता है, कोई उसकी कॉन्टेक्ट करता है और कोई उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल वर्क मिला होता है। So my sincere request to all of you is just don't narrow your journey, because as I told you earlier that research is a passion, and I am sure that this institute is doing a very marvelous job. As I have been to many of the programs and I have seen most of the papers also, and I always urge the students as well as the teachers who have just joined or who are already in the middle of their career to motivate students just not to run behind the CBC or behind the packages, just try to learn something, because that only will show you the way and lead the path of progress. अभी मैं डिस्कस कर रहा था हमारे आज के प्रोफेसर और डायरेक्टर साहब के साथ और मैडम के साथ, तो मुझे बड़ी एक अच्छी चीज लगी कि आई थिंक सो भोपाल इज द मोस्ट लिवेबल प्लेस इन इंडिया। आप लोग सब इसमें सहमत हो गए एंड सारा ग्रुप में अगर किसी ने काम किया है, पढ़ा है, तो इट इज द मोस्ट गुड ग्रुप टू वर्क। How many of you will agree with me? Thank you. So, मैं आप सबसे प्रेरित करता हूँ कि आगे भी इसी तरह और इनिशिएटिव्स आपकी यहाँ भी प्रोग्रेस होती रहें अलग अलग, और जैसे बताया गया कि it should not be restricted to one field or one department. सारे डिपार्टमेंट वाले एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लाएं। It is just not for every council आपके साथ बेहतर रहेगा। हम लोग का जो बेसिकली साइंस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कंपनी अदर जो चीज़ें चाहे वो सीरीज स्कीम हो, चाहे वो वर्कशॉप सेमिनार वर्कशॉप हो, इवन इंटरनेशनल ट्रैवल ग्रांट हो, इस सभी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारे यहाँ अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें आप लोग आके मिल सकते हैं। और कभी भी मतलब कैंपस के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ये बहुत कम लोगों को अंदाजा था, बहुत कम लोग इससे अप्रोच होता था। अभी it has been expanded to almost every university, all private, all government, all semi-government institutes. And now to tell you that we are achieving a milestone. We have already completed 40 years. It is around 40. This is the 43rd year. And it is one of the best councils in India. And और मैं चाहूँगा कि आप लोग जब भी आपको कोई भी प्रोग्रेस करने हो या इवन रिसर्च फैकल्टी को मैं आप लोग से मैं प्रेरित करता हूँ कि आप लोग रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी डाल सकते हैं। और ऑफ कोर्स वी डोंट फंड मच, पर लेकिन जो भी एक मिनिमम पड़ेगा 0 lakhs तक वो हम लोग पढ़ना है। एंड आई on behalf of my director general and on behalf of my colleagues and my advisors, I thank you all for giving me an opportunity and wish you all the best. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so very much to address this conference. Every once in a while, a new technology, an old problem, and a big idea turned into an innovation. We are blessed with the graceful presence of an expert in the field of science, engineering, and technology, Dr. J.P. Shukla, as the chief guest in this valedictory function. Before inviting him, I want to bring his profile. He went to many countries for academic visits. He is recognized supervisor in many state and national institutes, also in some universities.
guided more than 10 PhD scholars, more than 30 MPhil and almost 60 MTech students. He is the editor of many journals. He has more than 150 publications in the Journal of Repute, executed more than 50 R&D programs, seminars, workshops and training. He is the member of International Global Navigation Satellite System Society, Sydney. He is the member of Expert Appraisal Committee for River Valley and Hydroelectric Projects, Government of India. He is also a member of State Expert Appraisal Committee, Madhya Pradesh. Secretary, Vigyan Bharati, Madhya Pradesh. Secretary, Indian Geological Congress, Roorkee. Chairman, Indian Society of Remote Sensing, Bhopal chapter and many more. He has received n number of awards. I am briefing some of them. He has received KKC Award. He has received Vaigyanik Rajya Sabha Vishishta Samman Award for the Best Rural Technology Project, Young Scientist Awards and many more. Presently, he is holding many responsibilities in CSIR MP. There, he is working as a Chief Scientist and Head, Water Resources Management and Rural Technology Department and Chairman, Human Resources Department and Professor, Academy of Science and Innovation Research. With due respect and honor, I hand over the mic to Sirt. Thank you, madam, for very elaborative introduction. Good afternoon, respected members on the dais and off the dais and participants. Here I am very happy that my friend Dr. Ravi Bharadwaj is with us, Director of this institute, Madam, Dr. Jayan Madam, and all others. So, when I was discussing with Dr. Jain, Smita Jain, what is the topic of this program, she said that it is International Conference on Interdisciplinary Approaches. So, I have even thought that how this topic has been selected, some thinking behind it is always there. So, whatever research we are doing, we are trying to solve the problems, difficulties of our life. And to solve any problem, if we take example of any problem, we find that without interdisciplinary approach, we cannot solve. I belong to the Institute of CSIR, MP. It is one of 37 institutes of CSIR for country of here. So in our institute, scientists of various disciplines, they are from material science, from physics, from chemistry. Now some scientists are from biology also. Some people started questioning that this is the lab of material science. What is the role of these biological scientists? But now we are finding that they are making very nice projects. Because if you want to solve any problem and you want to develop a device, unless until suppose the device is being developed for examining any problem of the body, any disease. If you don't have the knowledge of biology, you cannot work on that. So, and they are taking help of other discipline scientists. So, any project which they are any scientist is executing in our institute, I am finding that at least 3-4 scientists of different fields are working together. Then only they can solve the problem. If any scientist work in isolation, he cannot find good results, good recognition,
is why multidisciplinary approach is very much essential to solve the problems. Earlier there were some basic sciences, very limited branches of science. But now, as time goes on, we find that new science streams are coming. When we were studying, we were knowing only physics, chemistry, mathematics, biology. I am a student of geology. I have taken geology subject. Then we find that there are various more subjects which are linked with chemistry or physics, like geochemistry, geophysics. So these subjects we have been taught. Just I am trying to tell that multidisciplinary approach is must to achieve the goal to solve a major problem. And if you are taking bigger problems like to solve a new disease or any national problem or international problems, you cannot work alone. And in that way, this topic has been chosen very nicely, and whatever thinking was behind it is very nice. By seeing the list of your programs, I was very much fascinated because whatever topics you have chosen, most of them are being practiced, and on those topics research is being executed at MD. Whether you take advanced materials for energy and environment, one scientist has got CSIR Scientist Award and one more international award on piezo electrical devices. Then coming to advancement and challenges of biology and biotechnology, many programs have been executed and some devices have been developed in this field also to detect the some kinds of cancers by utilizing protein detection, particular type of protein detection. So biological scientists are also in our lab working in this field. Then advances in synthetic theoretical chemistry, then advanced technology in textiles. In this field also we are working in geotextile, application of geotextile for various purposes. These geotextiles are being utilized for different type of materials like panels, etc. And this is used as geotextile to control the soil and water erosion. So if we take this list, more than 80% subjects are being covered in my laboratory. And I think the participants are from different corners of country, some outside also. So I welcome them all to the Bhopal, and I hope that they have delivered their research very nicely, and they must have been benefited from the deliberation of each other. For this institute, I have been associated for long duration. I have attended some programs. You can say that jointly organized some programs with Vigyan Bharati. I am also working for Vigyan Bharati. So I have association with this institute, and I know that this institute is performing very excellent and training the students, teaching the students so that they can lead the country, various fields of the country. I can also request you all who are from the state, this SIRT institutions, they can come to MD, join hands for developing project proposals and for different type of research areas. We also conduct skill training program. So for that, I also invite you can send your students. We can organize some
was staffs jointly. So these are the fields where MD can work with this institute. Another thing I discussed with the director sir that some papers, good papers are also here deliberated. So we are publishing one applied innovative research journal, which is quarterly journal. So good research papers can be published in that also. So that is open to you. And with this, this is the validity function. So everybody is planning to go back. So now I will start. Many, many thanks to all the participants and organizer of this program and management of this institute and very dynamic Dr. Smita Jain madam. And once again I thank you for inviting me in this occasion. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. Thank you, sir. Thank you so very much for accepting our invitation, for being with us and to address this conference. Also, thank you for the invitation of projects in MP. We will try our best in the same regard. Now, to show the gesture. Excuse me. निवेदन और आमंत्रण दोनों ही हैं. अगर आप में से कोई इस कॉन्फ्रेंस के विषय में कुछ कहना चाहें, कोई फीडबैक देना चाहें, तो आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं. Please now, welcome. बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर. सबसे बढ़िया इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस एंड साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का वन प्लेटफॉर्म पे सभी साइंस के सब्जेक्ट्स के हमें रिसर्च पेपर्स सुनने को मिले और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था. नेचुरली स्ट्रेंथ हम ये चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छी हो. तो ऑनलाइन तो बहुत सारे जुड़े थे, ऑफलाइन भी जुड़ेंगे और we will also participate in future programs also. Thank you. very much. आपसे ये वादा करते हैं कि अगले साल जब हम इस कॉन्फ्रेंस को करें, इस बार हम इसे चौथी बार कर रहे हैं, तो पांचवी बार हम चाहेंगे कि इसे हम कंप्लीट ऑफलाइन मोड में करें ताकि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े और अधिक रिसर्च पेपर्स को सुनने का हमें मौका मिले. To show the gesture of thankfulness and acknowledgement, I request Dr. Vikas S. Page, Director, SIRT Excellence, to present memento to our chief guest, Dr. J.P. Shukla sir. I again request Director sir to present memento to our guest of honor, Dr. Ravi Shankar Bharadwaj sir. Thank you, sir. It is said that no duty is more urgent than that of returning thanks. अच्छा लग रहा है जानकर हमारे बीच स्पेशल है जिसके तहत हमारे बच्चे अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हैं. सर स्पेशलाइजेशन रोबोनॉट्स में है, रोबोटिक्स में बहुत मदद करते हैं हमें सर. मैं आपको आमंत्रित करूँ. Thank you so much. I am honored to be here. Respected director sir, special guest,
शेयर करना चाहूँगा। आज जो 2023 चल रहा है, आज के समय में इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ऐसा है कि आप किसी एक स्किल पे रिलाई नहीं कर सकते। ओके, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको कोडिंग भी आना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा बहुत IoT की नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप आगे फ्यूचर में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी में फुलफिल कर सकते हैं। ओके, आजकल कंपनीज को ये नहीं चाहिए कि आपको क्या स्किल आता है, आजकल कंपनी देखिए आपको क्या क्या स्किल और आती है अदर देन योर ब्रांच। ओके, इसी के साथ मैं सेशन को एंड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी दिस प्लेस। थैंक यू। Thank you, Arpit ji. It is said, no duty is more urgent than that of returning thanks. Now, I would like to invite Professor Archana Saxena, HOD, Department of Applied Science, for proposing vote of thanks. Good afternoon to all. I, Professor Archana Saxena, HOD and Organizing Secretary of this conference. I thank you, our Chief Guest, Dr. J.P. Shukla Sir, Chief Scientist, and Bhopal. Sir, I thank you. आपने बहुत ही short time period में हमारे लिए ये समय निकाला. Thank you so much, sir. I thank you, Dr. R.S. Bhardwaj, sir, Senior Principal Scientist and Head Research and Development, MPCST Bhopal. Thank you, sir. Sir, MPCST से ये हमारी conference collaborated भी है. Thank you, Bhardwaj sir. Thank you. I thank you all the eminent speakers and session chairs who are associated with us in last 2 days. Dr. Alok Rastogi sir, Dr. Alka Pradhan madam, Dr. Pankaja Singh sir, Dr. Archana Sharma madam, Dr. Ruchi Singh ma'am, Dr. Neena Arora madam, Dr. Chandravan Makure sir, Dr. Vipul Srivastava sir. They have given us a very vast research work and knowledge to all of us. I thank you, our management and our chairman sir, Engineer Sajeev Agarwal sir, Executive Director, Architect Shivani Agarwal madam, Vice Chancellor Dr. Prashant Jain sir, and I thank you, our motivational source Dr. Vikas S. Phage sir, for his always motivation and guidance. Without sir motivation and guidance, this conference would not be possible. I thank you, my all the team members, Dr. Smita Rajan ma'am, Dr. Ekta Jain madam, Dr. Nazia Shafiq, Dr. Neelam Ushikar madam, Professor Paresh Shakir sir, Izhar sir, Ritika madam, Renu Pushpa madam, Raj Nandini madam, Lokesh Shukla sir, Sarika Tiwari madam. And I also thank you, Dr. Sneha Soni madam, HOD Computer Science Department, Professor Sandeep Gupta sir, Professor Neeraj Nagai sir, for all their support and cooperation. Last but not the least, my dear student, Khushi Sharma, Saloni Ginde, Rohit, Saurabh Suman,